Good morning, all of you. This lecture is for class 11th, and today we discuss a new topic from redox reaction, that is galvanic cell. That is what? Galvanic cell. First of all, what is a galvanic cell? Then it is a device which can convert chemical energy into electrical energy. केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का क्या मतलब बेटा कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। देन first of all we have to discuss the construction of a galvanic cell. Galvanic cell कैसा दिखता है? What are the different parts of galvanic cell? Then a galvanic cell consists of two chambers. One is anodic chamber, another one is cathodic chamber. One is anodic chamber, another one is cathodic chamber. Then this anodic chamber have zinc anode which is negative in nature, and the cathodic chamber have copper cathode which is positive in nature. याद रखेंगे, जिंक इज नेगेटिव इन नेचर एंड कॉपर इज पॉजिटिव इन नेचर. जिंक इज एनोड एंड कॉपर इज कैथोड. This zinc anode dipped in a solution of ZnSO4 and the copper cathode dipped in a solution of CuSO4. जिंक जो है वो ZnSO4 के सॉल्यूशन में पड़ा है और जो कॉपर है वो CuSO4 के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है. ठीक है. देन कनेक्ट दिस टू विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर एंड अ की. मीन्स आपने सर्किट को पूरा किया हुआ है. देन this is the external connection of the circuit. Then internal connection of the circuit should be connected with the help of a inverted U-shaped tube. Internal connection of the circuit should be connected from inverted U-shaped tube, and this tube is known as salt bridge. This tube is known as salt bridge, and this salt bridge consists of KCl or Ki along with a semi-solid material, a jelly-like material that is known as agar. A jelly-like material that is known as agar. This is basically an algae. So this zinc anode and this is the copper cathode. This anode is negative and cathode is positive, and both the two half of reactions connected with the salt bridge. This salt bridge consists of a jelly-like material agar with KCl or Ki, with KCl or Ki, KCl or Ki. Then this anodic chamber is known as oxidation half, and this cathodic chamber is known as
reduction half. Reduction half. This is oxidation half, and this is what? This is reduction half. Then reaction in the oxidation half. Oxidation half is zinc will gives Zn2 positive plus 2 electron. Zinc get oxidized to zinc 2 positive, zinc double positive plus 2 electron, and ZnSO4 gets dissociated to form Zn2 positive plus SO4 2 negative. Zinc will give Zn2 positive and 2 electron. This is the oxidation process of zinc, and this ZnSO4 dissociates into Zn2 positive and SO4 2 negative. Then it is clear that production of 2 electrons takes place at the anodic point. Then this 2 electron will travel towards cathode. This 2 electron travel towards cathode. ये 2 electron cathode की तरफ move करेगा, and this is the direction of flow of electron. Flow of electron. So from the concept of Faraday law, the direction of flow of electricity, the direction of flow of electricity is always in the direction of flow of electron. इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड. दिस इज द question for objective. What is the direction of electricity in galvanic cell? That is cathode to anode, positive to negative. Then what is the direction of electron in a galvanic cell? Then this is negative to positive. Then in the reduction half, the reaction will be copper SO4, copper sulfate will gives copper 2 positive plus SO4 2 negative. Copper sulfate will give copper 2 positive plus SO4 2 negative, and this copper 2 positive when accept this 2 electron, then it will form Cu2 positive plus 2 electrons gives Cu. This is the process of reduction. This is a process of reduction because oxidation state of copper becomes 0 from +2, and here oxidation state of zinc becomes +2 from 0. So this is oxidation process and this is reduction process. So in this figure now it is clear that at anode there is oxidation and at cathode there is reduction. Okay, and the loss of electron is of 2 electron. कितने का लॉस हुआ है? 2 electrons का. Then what is the salt bridge? Then this salt bridge shows a special type of reaction, that is KCl will gives K positive plus Cl negative. KCl will give K positive and Cl negative. Then this Cl negative pass through this salt bridge towards the anodic chamber. This Cl negative pass through the salt bridge towards the anodic chamber, and this K positive pass through the salt bridge towards the cathodic chamber. Now what are the functions of this K positive and this Cl negative? Why this compound gets dissociated? ये टूट क्यों गया? इसका फंक्शन क्या है? आगे क्या होगा इसका? ठीक है. Then at the time of oxidation, this zinc get converted into Zn2 positive. This zinc get converted into Zn2 positive. Then since it is an anode, since this is an anode, so accumulation of large number of zinc 2 positive
can slow down the activity of this galvanic cell because this is anode and the accumulation occurs for the positive charge. accumulation जो हो रहा है वो positive charge के लिए हो रहा है. And this cathode, since this is positive and gathering of electron makes this negative. यहां क्या है, ये निगेटिव है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, इसको पॉजिटिव बना रहा है. यहां क्या है, ये पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो कंटिन्यूअस फ्लो है, सिंस the continuous production of Zn2 plus takes place, then this continuous flow of electron makes this cathode negative. So due to these two facts, a galvanic cell can slow down its activity. To recover these two circumstances, KCl gets dissociate and pass some Cl negative towards the anodic chamber and some K positive towards the cathodic chamber. इस समस्या को रोकने के लिए ये जो हो रही है यहाँ पर, इसके लिए क्या हुआ, KCl टूटा और क्या बना, कुछ Cl नेगेटिव एनोडिक चैम्बर को दिए गए और कुछ K पॉजिटिव किसको दिए गए, कैथोडिक चैम्बर को. Then this Cl negative when react with zinc, it will form this Cl negative when react with zinc, it will form ZnCl2. Zn2 plus 2 Cl negative will form ZnCl2. And in case of K positive, 2K positive plus SO4 2 negative will gives K2SO4. आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहां तो Zn2 प्लस से रिएक्ट कराया, यहां SO4 से क्यों करा दिया, Cu से क्यों नहीं कराया? क्योंकि जितने Cu2 पॉजिटिव थे वो तो इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके पहले ही Cu बन गए. जितने Cu2 पॉजिटिव थे वो तो इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके पहले ही कॉपर बन गए. तो बचा क्या, बचा ये SO4. क्योंकि CuSO4 टूटा, उसमें दो चीजें निकली, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव. दिस Cu2 पॉजिटिव ऑलरेडी एंगेज विद द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, देन ओनली दिस SO4 2 नेगेटिव रिमेन्स इन दिस बास्केट. ठीक है. सो दिस SO4 2 नेगेटिव व्हेन रिएक्ट विद K पॉजिटिव, देन इट विल फॉर्म पोटेशियम सल्फेट. देन फॉर्मेशन ऑफ टू स्पेशल आयंस takes place. One is ZnCl2 zinc chloride, one is ZnCl2 and another one is potassium sulfate. But there is no function related to zinc chloride as well as potassium sulfate, because both these salts are soluble in water. ये दोनों सॉल्ट जो है ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल है. ठीक है. तो ये दोनों सॉल्ट जैसे ही बनते हैं वैसे टूट जाते हैं. एज सुन एज दिस द फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 टेक्स प्लेस, it gets dissociated into Zn2 plus and 2 Cl negative, and this reaction continues to the lifelong process. ये जो है ये पूरे जब तक गैल्वेनिक सेल चलेगी तब तक ये रिएक्शन जो है ये कंटिन्यू रहेगी, और सेम एज दिस फॉर्मेशन ऑफ K2SO4 विल ऑल्सो कंटिन्यू. ठीक है. तो ये क्या था, ये था गैल्वेनिक सेल का पूरा रिएक्शन कि गैल्वेनिक सेल किस तरीके से काम करती है. ठीक है. इसको देखिए और उसके बाद बुक को पढ़िए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. दो मेन क्वेश्चंस यहां पर आते हैं. पहला ये, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, इंटरनल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना. यहां जो इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस हुआ था उसको इसने बैलेंस किया बाय मीन्स ऑफ Cl नेगेटिव एंड K पॉजिटिव. देन what is the reaction of oxidation half, what is the reaction of reduction half, and what is the reaction of salt bridge, and what is the working of this galvanic cell. Okay guys, thank you very much. सारी चीज़ों को देखिए, समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, और अगर कुछ नहीं आए तो फिर मेरे से आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक्स एवरीवन.